Hello dear students, today we will start with lesson number 9, that is gravitation. In this explanation as well as notes will also be provided. You have to listen, read and understand properly and write the important points in your science notebook. So now we will start. Gravitational force, it is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so as much as the distance is there, so least amount of gravitational force, मास ज़्यादा होगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा. Both apply equal and opposite force. Each and every object attract each other with force of attraction. So Newton derived the laws of gravitation. The force applied is the product of mass and acceleration. Mass and acceleration are very important in the gravitational force. If the mass is more, acceleration will be less, क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम होगी. जैसे एग्जाम्पल है कि जितना तेज़ डियर हिरन भाग सकता है उतना तेज़ एलिफेंट नहीं भाग सकता. रीज़न इज़ ओनली ग्रेविटेशन प्लस द मास. मास ज़्यादा होगा तो उससे एक्सेलरेशन कम होगा पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा. So here you can see the statement is also written. Now universal law of gravitation. It states, as you can see, two objects are there at the distance AB. Okay, objects are, we have considered AB, D is the distance between the two objects. Then we consider the masses as M1 and M2. So one object is bigger in size and another is smaller. So it will depend on the mass also. So M1 is greater than M2. Then every object in the universe attracts each other object with force which is directly proportional to their distance and inversely proportional. ये remember करना ज़रूर, to the distance between them. So force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. This I will explain you again also as it is written in your textbook also. But how it is derived? Every object in the universe is attracting which is directly proportional. यह बार बार बोला जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए. तो हमने ये फोर्स को डायरेक्टली किया, अब हम इसको कांस्टेंट करना है. ओके, तो फॉर कांस्टेंट वी विल ऐड कैपिटल G विच इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट. कैपिटल G इज़ देयर, तो इक्वल टू करके हम कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऐड कर देंगे and it is called as universal gravitational constant. So this is the equation which is derived. F is, so अगर हमने G को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, so this is the formula, it is derived F d square upon product of the masses. G की वैल्यू होती है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा यूनिट रहता है. मोस्टली इसको इस तरह से लिखा जाता है. सो दिस इज़ द प्रॉपर फार्मूला ऑफ G यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन. ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है, कैसे आया वो भी आपको बता दिया एंड रिमेंबर इट. सो ये टॉपिक्स जो दिए हैं ये हम कवर करेंगे. इसमें सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए, ये सारे हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. दिस इज़ द कॉमन स्टेटमेंट फॉर द ग्रेविटेशन विच इज़ द लेसन नेम. Its meaning of our heading: Earth attracts everything towards it by an unseen force. We cannot see that force and that force is always called as gravitation, or we can say the magnetic pull which the earth has, and the maximum is in the under the earth's crust. All objects in the universe attract each other. There is force of attraction between them and that is called as gravitation. It is directly proportional to the masses of the object and inversely proportional to the square of distance between them. This is universal law of gravitation. Directly और inversely के में difference तो आपको पता ही होगा. जितना ज़्यादा mass होगा उतना ज़्यादा gravitational pull होगा. अगर weight या mass कम होगा तो gravitational pull कम होगा. And distance, जितना दूर डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ग्रेविटेशनल पुल उतना ही कम होता जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन हियर.
Let two objects A and B of masses m, means capital M and small m, lie at the distance small d from each other. As you can see, the figure is given, and let the force of attraction be capital F. According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of the masses. So you can see here it is written F is directly proportional to capital M and small m. And the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. That is, F is inversely proportional to 1 by d square. So combining both the equation, we get F is equal to G capital M and small m upon d square. So this is the proper formula or equation which we have got by combining both the equations. We get F is equal to G capital M small m means mass, and then by d square means the distance, square of distance, and the value of G, it is universal constant, it is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton per meter square per kg square. Okay, so this is the डेरिवेशन हाउ वी एज यू ऑल कैन सी हियर. हमको ये फॉर्मूला कैसे मिला? हमारे पास दो थे, हमने पढ़े लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो ये जब हमने प्रोपोर्शनल किया उसके बाद हमको F इज इक्वल टू करने के लिए हमने कैपिटल G लगाया विच इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट. It is proportional and it is called as universal gravitational constant. By multiplying crosswise we get F into d square is equal to Gm into m. Importance of universal law, you can see it is written, it binds us to the, मतलब हम अर्थ पे खड़े हो पाते हैं, हम उड़ते नहीं एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमको पकड़ के रखा हुआ. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स ऑफ मून causes tides, that is high tide and low tide on earth. Now to explain the further topics, I will first explain you the Newton's first law and second law of motion. As you can see, every object will remain at rest until and unless any force or pressure is applied to it. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो. Like you can see the ball is kicked and it will move and move until external pressure is not there. It will go slowly and stop at a particular place. So Newton says body continues to be in the state of rest or uniform motion. या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब एक्सटर्नल प्रेशर होगा तब जाके वो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा. अब अनबैलेंस्ड होता क्या है? ओके, यू कैन सी देयर इज टग ऑफ वॉर, बोथ साइड्स दे आर continuously moving the rope, but it is not possible because both sides same forces apply. So this is balanced force. But once the balanced force is not there, okay, so this is unbalanced force, means there more pressure is applied on one side and less pressure is applied on the other side. So this is unbalanced force. Okay, so until unbalanced force किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं होगी एंड इट विल रिमेन एट रेस्ट. एज यू कैन सी अनबैलेंस फोर्स हुआ तो इसके कारण एक पार्टी या एक ग्रुप की हार हुई और दूसरे ग्रुप की जीत हुई. यू कैन सी द बॉल इज not in the state of motion, but as the external unbalanced force is applied, the ball comes in motion. So this was Newton's first law. इसको Newton's first law of motion को inertia भी बोलते हैं. Inertia 3 types के होते हैं, inertia at rest, inertia of direction and inertia of motion. Now you can see here a bus is there, and in the bus or in any 4-wheeler vehicle, 2-wheeler vehicle we are sitting. So our body, when the vehicle starts moving, the body goes backwards direction. Reason is what? The reason is that the bus was at rest, so our body was also at rest, means our inertia was at rest. But as the bus starts moving, so हमारा जो नीचे लेग्स का एरिया है वो नहीं मूव हो रहा, पर हमारे ऊपर की बॉडी के हिस्से में मोशन आया जिसके कारण हम थोड़े से बैकवर्ड्स हो गए. ओके, क्योंकि बस ने आगे मूव करना शुरू किया तो उसने हमारी बॉडी को अनबैलेंस फोर्स दिया जिसके कारण बॉडी पीछे की तरफ हुई. एज यू कैन सी हियर, बॉल के नीचे से कार्डबोर्ड हटाया गया. फिर एनी व्हीकल इज़ मूविंग
or a person standing inside the vehicle or sitting inside the vehicle, there is movement, either the vehicle stops or moves. This type of example is given in your textbook also. So this is applicable for the rotation of planets also. क्योंकि वो बाइंडेड होते हैं अर्थ से, इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं. अब जैसे ही व्हीकल स्टॉप हुआ आप देख सकते हैं तो बॉडी आगे की तरफ झुकी. सो दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन. बिकॉज अवर बॉडी वॉज इन द मोशन पोजिशन, बस स्टॉप हुई तो बैंड फॉरवर्ड because the bus was in motion and it stopped. So that is inertia of motion. But nothing happens to the legs area because only the upper portion is affected. So we have to understand with the help of these examples Newton's first law of motion or inertia law. Okay, you can see the ball is continuously moving and it will stop because there is no external force of applied on it. This is Newton's first law or law of inertia. So all these examples prove the Newton's first law of motion, or it is also called as law of inertia until external force is applied on the particular object. We'll discuss about free fall. When an object falls from any height under the influence of gravitational force, कोई भी चीज़ होती है वो नीचे ही गिरती है, रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते हैं फ्री फॉल. सो दिस इज रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. एक्सेलरेशन हैपेंस मीन्स चेंज इन स्पीड हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ देयर इज चेंज इन द स्पीड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. The unit is same, small g and meter per second square. Now we will discuss Newton's second law of motion. This animated is prepared so as you can understand properly. The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of force. So from the second law of motion, the force is the product of mass and acceleration. Okay. Here you can see how the equation is derived. As the earth is not a perfect sphere, the radius of the earth increases from the poles of the equator and value of g becomes greater at the poles than the equator. So g value is more at the poles as compared to the equator. So this is how our equation is derived. Force is directly proportional to the mass and acceleration due to gravity. Now you will look here, Newton's second law again, change of momentum of an object is directly proportional. Okay, you remember this, it is directly proportional to that.
must have understood force is directly proportional to mass into acceleration. Now the importance, ये laws तो बन गए पर ये है इनकी importance. These keep us binded to the earth. Motion of planets is due because of it. Motion of earth is because of it, and as well as high tide and low tide is also because of it. All this gravitational force. Free fall always happens when anything is thrown, it falls at the earth because of the gravitational force, and there is acceleration. The fall under the influence of the earth is called as free fall. During this fall, what happens? There is continuous change in the
velocity, so that is called as acceleration due to gravity, and it is denoted by small g. Okay, it is unit is same, meter per second square, and there is difference between capital G and small g. Now its value will be 9.8 meter per second square. The value of acceleration due to gravity of the earth is 9.8 meter per second square. Gravitational acceleration is under the influence of the earth always, and it is represented by g. So how we will calculate value of small g? Here it is given. So here it is, as we have studied, to calculate we should put the values of capital G, capital M and R. Then capital G value is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton per meter square. The value of M is 6 into 10 to the power 24 kg, and radius of the earth, that value is 6.4 into 10 to the power 6 meter. So as we calculate this by using the formula small g is equal to capital G into M, that is capital M upon R square. Here it is given. So here we will use all the values and then we will calculate, and the universal value comes as 9.8 meter per second square. So here is the difference as well as the GM by R square. This is the formula used to calculate the value of G. Gravitational constant and gravitational due to acceleration. So this is the difference given between capital G and small g. This you have to understand and write down in your science notebook. Whatever important points you feel, you have to write everything. Value differs, you can see it remains constant capital G. Value of G varies, as we discussed. It is greater at poles than at equator. Unit is different, Newton per meter square per kg square. Its unit of small g is meter per second square. Scalar quantity it is measured, and it is measured using vector quantity, that is small g. An example is taken if two stones of different masses 150 mg and 500 grams 150 gm and 500 grams are dropped at a height, which stone will reach first? So this was a huge discussion when the life loss was going on. So Galileo first demonstrated and depicted that the acceleration of an object falling freely towards the earth's crust does not depend on the mass of the object. मास पे डिपेंड नहीं करता है वो कौन सा जल्दी आएगा. सो ये वेरीफाई हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. ये फॉर्मूला यूज़ किया गया जो हमने अभी पहले डिस्कस किया. तो लास्ट में हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू GM2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये फॉर्मूला यूज़ किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स का एंड द फोर्स एक्टिंग, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि जितना मास के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी चेंज होता है. So acceleration depends on the object falling freely towards the earth on the mass of the earth and height of the object. वो कितनी हाइट से ऊपर है और mass of the earth वहाँ पे कितना है. तो stone of masses 150 gm and 500 gram will reach together क्योंकि उनका area earth से ऊपर same है. Comes the difference between mass and weight. Means what is the difference between M and W? The mass of the body is the quantity of body contained in mass. Scalar quantity में है but only magnitude but no direction. Okay, it is kilogram. मास का होता है यूनिट होता है किलोग्राम. मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास ऑफ द बॉडी इज यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल m. मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो. मास मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर का है, हमारी ऑर्गन्स का, हमारी स्किन का, जो हमारी बॉडी के अंदर का है वेट मास, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं जिसका कि मेजरमेंट kg में होता है. नाउ व्हाट इज वेट? इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो बट देयरफॉर द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन. सो इसीलिए हम कितनी बार कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो वेट है अर्थ पे अलग आएगा, मून पे अलग आएगा अगर कैलकुलेट किया जाए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी फोर्स रिलेटेड ऑन विच वी आर स्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस. वेट इज द फोर्स एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन. इट डिपेंड्स ऑन G एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. कहाँ कितनी ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है. इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं कि सपोज मास हम वेट ऑफ द गोल्ड इक्वेटर पे ज़्यादा होगा कि पोल्स पे ज़्यादा होगा. ओके, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक.
रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इन न्यूटन, अगर हमको मास का न्यूटन में एक्सप्रेस करना है. सो दिस इज हाउ वी विल एक्सप्रेस मास इनटू ग्रेविटेशन. जो ये हमने 9.8 कैलकुलेट किया था 9.8. सो जितना मास होगा, सपोज 50 kg है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से. हियर इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट गिवन. यू रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड राइट डाउन इन योर साइंस नोट. वी कैन मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इनर्शिया. इनर्शिया बता दिया पहले. फिर वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स m इंटू जी. 9.8. द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज वेट. मास एंड ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, कांस्टेंट होता है. अगर हम 50 kg के हैं तो हम पोल्स पे भी 50 kg रहेंगे, इक्वेटर पे भी 50 kg रहेंगे. मून पे जाए तो वहाँ भी 50 kg रहेंगे. बट वेट में चेंज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस. मेजरमेंट ऑफ मास इज डन यूजिंग अ pan or beam balance. Measurement of weight is done by using a spring balance. Okay, and the units are also different. Here are some exercise which is also solved and given, so you can look into it, understand it and then write in your notebook. If any query you have, you can clarify by messaging me. So some answers related to the questions I have written here. You can pause the video and understand and then write it down. So that is all for now, children. You see all the numericals, few topics related to this chapter are left. So this is part 1 video. In part 2 video I will explain the remaining topic, that is thrust and pressure, then Archimedes principle, buoyant force. You see these all topics I will explain you in part 2 video. Till then you keep solving all the question answers and read your textbook content thoroughly. Thank you.